Assalamu alaikum to my YouTube channel Akshay Pharmacist Mariam. Today we'll be discussing about the chapter 2 of the Marketing and Management Manager. So in this chapter we will discuss कि मैनेजर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, मैनेजर क्या क्या रोल प्ले करता है, रोल्स ऑफ द मैनेजर क्या होता है, और मैनेजर्स की कितनी टाइप्स हैं, और कौन कौन सी एबिलिटीज हैं टाइप मैनेजर्स की, और उनके अंदर कौन कौन सी इननेट एबिलिटीज होनी चाहिए टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ वेल मैनर वे. So this is the chapter of pharmaceutical marketing and management by Dr. Nadeem Irfan Bukhari, book edition 2011. But चलें आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Before starting this lecture, I will request you to kindly subscribe to my channel and support my channel by hit the bell notification on and sharing this to your community. तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अगर ड्यूरिंग लेक्चर आपका कोई क्वेरी है तो आप फील फ्री एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टू आस्क द क्वेरी. तो चलें स्टार्ट करते हैं. मैनेजर. सबसे पहले मैनेजर होता क्या है? सो मैनेजर इज एन इंडिविजुअल who carrying out the managerial function of an organization, and during the managerial function of organization, he would be organizing, he would be planning, he would be staffing, he would be leading, and he would be controlling, and he would be called as the manager. Thus the managers are needed to plan, organize, hire staff, supervise, and guide the group of workers in an organization in pursuit of the organizational objective. The success of the firm largely relies on efficiency of its manager. The performance of the managerial function is mentioned above in the organization. Prerequisites can show the abilities of the manager. ये लिखा होता है कि एक मैनेजर का क्या फंक्शन है, उसने क्या क्या रोल प्ले करना है. द डिटेल्स ऑफ द मैनेजरल फंक्शन आर रोल्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द मैनेजर हैव बीन गिवन इन द फंक्शन एज गिवन इन द टेक्स्ट. वो क्या क्या फंक्शन ऑफ द फॉर्म जो है वो मैनेजर है वो ये है. The function of manager are of diversified nature and largely depend on the size and the type of pharmaceutical concern. डिपेंड करता है इंडस्ट्री का कितना साइज है, उसका उसकी क्या क्या फार्माकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, और वो क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बेस पे उसके मैनेजर्स होंगे. फॉर एग्जांपल QC डिपार्टमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड QA मैनेजर, officers वगैरह different managers. So these are the different type of the manager, and these functions include the planning, organizing, staffing, directing, leading, controlling, and coordinating. In practice, all these functions have been performed simultaneously, but more than one less importance giving to each function. For example, in an established enterprise, planning function and preceded all other function. क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग और जो है वो फंक्शन, प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इन दैट इंटरप्राइज जो होंगी वहां पे, जो ये फंक्शंस जो होंगे वो इंटरप्राइज होंगे. फॉर एग्जांपल न्यूली एस्टैब्लिश इंटरप्राइज प्लानिंग फंक्शन प्रिसाइड ऑल ऑफ दिस फंक्शन. वहां पे प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उन्होंने अपना पूरा वर्किंग क्राइटेरिया जो है वो प्लान करना है. दीज आर द फॉलोइंग स्पेक्ट्रा इन द मैनेजर कैन वर्क. उसमें आ जाती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हायरिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. इसको एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले है प्लानिंग. प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन, द वे ऑफ परफॉर्मिंग टाइम, कि वो क्या क्या उसके प्लान होंगे, क्या क्या उसका कोर्स ऑफ एक्शन होगा, किस तरह उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है. तो द प्लानिंग स्टार्ट विद द डिसीजन ऑफ कमिटमेंट ऑफ द ह्यूमन materials and resources and the repetition of the following analysis or proposal. Planning is a function of manager, although the character and the amplitude of the planning will vary with each manager authority and with the nature of the policies. हर मैनेजर के साथ उसकी अथॉरिटी, उसकी प्लानिंग जो है वो वेरी करेगी, बट मैनेजर एट द एंड मैनेजिंग करेगा होगा और प्लानिंग करेगा. द एबिलिटी ऑफ द प्लान इफेक्टिवली इज अ प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सक्सेस ऑफ द मैनेजर. जितना अच्छा वो प्लान बनाएगा, जितना वर्केबल प्लान होगा, उतना ही वो अच्छा मैनेजर होगा. A true manager one who has been given a certain degree of choices and प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके पास सर्टेन टाइप ऑफ दी प्लानिंग और चूज करने की जो है वो डिफरेंट उसके पास पावर होगी. A true manager is the one who has given the certain degree of the choices of the planning responsibility. The effectiveness of a plan
pertains that the degree of which achieve and the purpose, यानी जितना हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल रह रहा है और उसके गोल अचीव हो रहे हैं, तो that would say that this is a successful plan. Plan has efficient if they are achieved their purpose as a reasonable cost measured in terms of the money and resources and the degree of the individual and the group. Next comes the organizing. Organizing is also responsibility of the manager. Organizing involves the establishment of the international structures, theory for the people to fill their organizational role. And it is the intentional in the sense of that they take necessary accomplish goal, can assign and anticipates assign to the people who can get them. The purpose of organization की अगर हम बात करें, so the purpose of an organizational structure is to the help in increasing the environment for the human performance. Although the structure defined होना चाहिए ताकि सब अपना organized way में अपना अपना role जो है वो play करें. The task to be done, the role of established must to be is designed in the light of the abilities and the motivation of the people. ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये भी देखना है कि कौन सा बंदा क्या काम करना पसंद करता है और उसको ज्यादा मोटिवेशन फील होती है अगर उसको वो टास्क जो है वो असाइन किया जाए और उसकी बेस पर उसको वही टास्क जो है वो असाइन किया जाएगा. द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नॉट टू इजी मैनेजमेंट टास्क बट कि लोगों में जो वर्क है वो डिवाइड हो जाए और हर कोई अपना अपना डिफाइंड काम कर रहा हो. मैनी पीपल आर डिफाइंड इन मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सिचुएशन including both like uh, they're making structure for the situation and including the both defining the kind of the job and they have to be done and find people who can done that job in who can do that job in an effective way. तो ये ही ऑर्गेनाइजिंग में होता है कि ऐसे लोग ढूंढने हैं जो उस काम में मोटिवेटेड है काम को करने में और वो उस काम को करने में जो है वो अपनी एनर्जी फील करते हैं और वो ये काम कर भी सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टाफिंग यानी लोगों की हायर करना और लोगों को जब हायर कर लिया तो उसके बाद उनको मोटिवेट करना और वहां पर स्टे रखवाना उनको. स्टाफिंग इन्वॉल्व्स द फिलिंग इन एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. लोगों को हायर करना और वहां पे हायर रखना, ये ना हो कि वो छोड़ जाए. आइडेंटिफाइंग वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट एंड द रिकरिंग recruiting, placing, promoting, appraising, compensating, and creating and developing job holders so that they task and accomplish effectively and they achieve effectively efficiently including in the staffing ताकि उन लोगों को प्रमोशन मिले टाइम से अप्रेजल मिले उनको कंपनसेशन मिले उनको डेवलपमेंट उनको जॉब होल्डर्स को जो है वो प्रॉपर प्लेसिंग प्रमोशन और उनको रिक्रूट किया जाए वो सारा काम स्टाफिंग में आ जाता है. स्टाफिंग आइडेंटिफाइज एज द separate managerial function usually performed by a separate department rather than done by the manager. A separate department for the staffing in an organizational required the following things. क्या क्या है उसमें? Staffing of the organizational demand, knowledge and approaches not usually recognized by the practicing manager who often thinks of the organization setting and structure of the roles. नॉलेज और अप्रोच हो उसको पता हो कि अब इस जॉब के लिए उसने किस लोगों को हायर करना, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, उनकी क्या क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उनकी क्या क्या उसके लिए पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बेस पे उनकी नॉलेज और अप्रोचेस बहुत जरूरी है. मेकिंग स्टाफिंग a separate function facilities placing an even greater emphasis of the human element selection, appraisal, career planning and the management of that employees that are in the organization. थर्ड में आ जाता है an important body of the knowledge and experiment and the experience has been developed in the area and staffing should have that broad knowledge and experience. Then comes the manager often outlook the fact that the staff in there is had their responsibility not their personal department और उनको ये भी हो कि स्टाफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ही हैव और शी हैव टू कंप्लीट दैट टास्क.
सो टू श्योर दैट दी डिपार्टमेंट जो है वो अपने अवेलेबल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है और अपना काम कर रहा है और अपनी फिल पोजीशन पे जो है वो क्वालिफाइड पर्सन हायर हुआ है, तो ये भी एक पर्सन जो है वो उसका भी मैनेजर का फंक्शन है कि वो प्रॉपर स्टाफिंग कर रहा है और वो लोग वहाँ पे जो खाली वैकेंसी थी वो फिल्ड है और वहाँ पे जो है हाईली क्वालिफाइड और मोटिवेटेड लोग जो वहाँ पे स्टाफ है और वो ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल भी हैं। देन कम्स द लीडिंग। The managerial function of leading is defined as the purpose of influencing the people so that they contribute the organizational goal. लोगों को इस तरह डील करना, इस तरह उनको जो है वो मोटिवेट करना, इस तरह उनको जो है वो इंस्पायर करना कि वो कंपनी से फर्म से लॉयल होकर कंट्रीब्यूट करें अपने पावर, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज को टू मोल्ड इन दैम इन दैट वे के उनसे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और गोल जो है वो अचीव करवाएं. It has been predominantly with interpersonal aspect of the managing as a matter of the fact. The most important problem arising in the people and the desire is their attitudes. उनके behavior. हर पर्सन का अलग बिहेवियर, इंडिविजुअल उसका बिहेवियर होगा, उसके उनके एटीट्यूड्स होंगे, पीपल टू पीपल वैरी करेंगे, उनकी डिजायर्स भी वैरी करेंगी, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, किसको जो है वो मोटिवेशन चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ शाबाश, किसको पैसा चाहिए, किसको अप्रेजल चाहिए, किसको प्रमोशन चाहिए, किसको कार चाहिए. तो ये चार सारी उनकी एटीट्यूड्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो देखने होते हैं, उनकी डिजायर्स क्या क्या हैं, देयर बिहेवियर्स एज एन इंडिविजुअल इन द ग्रुप, और लोगों के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है. द इफेक्टिव मैनेजर नीड ऑफ इफेक्टिव लीडर. एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा लीडर होता है टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम. सिंस द लीडरशिप इम्प्लाइज फेलोशिप एंड द पीपल learn to follow those of as a leader, and they should satisfy their own needs, wishes, and desire. It is understandable the leading involves motivation, leadership styles, approaches, and communications. Next आ जाती है controlling. उन लोगों को कंट्रोल करना और उनके एक्शंस को ऐसे कोरिलेट करना कि ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द इंटरप्राइज जो है वो अचीव हो. कंट्रोलिंग इज अ मेजरमेंट ऑफ द corrections of the worker performance in order to ensure that the enterprise objective and plan devised to attain them from being to complete that task. Planning and controlling are closely related and may be viewed as a blade of the scissor that can work closely related and may viewed again and separately, and they will have to work and used in a form of pair. Without objective and plans, control is यूजलेस. सो एक अच्छे प्लान और एक अच्छे जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ जब हम कंट्रोल करते हैं तो इट इज पॉसिबल टू अचीव एंड मेजर against the established criteria. Controlling is a function for every manager and the management directors and the supervisor. The primary responsibility of the exercise control rest of the every manager is to charge with एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान. उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट करना है, उन्होंने प्लान डिजाइन करना है, इसलिए उन लोगों को जो है वो कंट्रोल करना है. ऑल्दो द स्कोप ऑफ द कंट्रोल वेरीज अमंग द मैनेजर, those all individuals have the responsibility of the execution of the plan and control, and therefore there is essential manager function of every managerial level. So जो कुछ कुछ जो है वो steps हैं to control तो for the basic control process वो है सबसे पहले establishing of the standard. एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना है ताकि उन लोगों को हम उसके मुताबिक जो है वो कंट्रोल करें. देन मेजरिंग द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, और उन लोगों की परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हमने देखनी है कि क्या वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहे हैं. देन करेक्शन ऑफ द वेरिएशन फॉर द स्टैंडर्ड एंड द प्लान, और अगर वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो हमने उनको कैसे मोल्ड करना है कि वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करें. नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कोऑर्डिनेशन. लास्ट रोल ऑफ द मैनेजर, उसमें आ जाती है कोऑर्डिनेशन, यानी डिफरेंट मैनेजर, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट लोग जो काम कर रहे हैं, हर कोई अपना डिफाइंड रोल प्ले कर रहा है, उनको हमने ऐसे कोऑर्डिनेट करना है कि वो सारे अपना अलग अलग काम करके एक सिंगल गोल अचीव करें. Coordination is the essence of managership, is the achieving of harmony among the individual efforts toward the completion of the group goal. Each of the manager function is an exercise contributing to the coordination. Since the organization is a collective collection of the several people and have different interests and different roles and different work they are doing, so they are working mutually together automatically, and their effort is also automatically
coordinated and attached to one another. अगर फॉर एग्जांपल क्यूसी वाले जो है वो क्यूसी नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मैनेज नहीं होगी, क्यूए की नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी मैनेज नहीं होगी, आगे वो सेल तक नहीं जाएगी, पैकेजिंग तक नहीं जाएगी, वो बैच जो है वो फेल हो जाएगा. तो दैट्स द थिंग जो कि इस चीज को देख रही होती है इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. In this, it becomes the central task of management to reconcile difference in approaches, timing, effort, and interest, and in a harmonizational way to contribute ultimately toward the organization goal and achievement of the objective of the organization. आगे आ जाती है रोल्स ऑफ द मैनेजर्स. क्या क्या रोल है मैनेजर की जो वहां पे वो प्ले कर रहा होता है. So there are several major roles that is played by the manager, and there are the categories into the, for example, interpersonal, informational, and decision making. तो ये डिफरेंट रोल्स होते हैं. डिटेल्स इन सबकी देखते हैं. तो सबसे पहले आ जाती है इंटरपर्सनल्स. इंटरपर्सनल्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी. सबसे पहले इंटरपर्सनल में आ जाएगी फिगर हेड. ही शुड बी एन एग्जाम्पल, ही शुड बी एन आइडियल, नमूना होना चाहिए, एन आइडियल होना चाहिए फॉर द अदर, एंड कीप योर मैनेजर एट द इमीडिएट बॉस हैप्पी. इसलिए कहते हैं कि वो क्योंकि आइडल होता है, इसलिए क्या करना है उसने अपने जो इमीडिएट जो सबऑर्डिनेट है ना उसने अपने इमीडिएट बॉस को हमेशा खुश रखना है. ये उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती हैं. फिगर हेड example and an ideal. A manager is a symbol of authority and leadership, so he perform a symbolic role and he performs his duty according to the legal and social nature. Then comes the leader, control of the rule and regulation of the and he can regulate for the incentives and he can thread them to fire. So he has the leader. Leadership is the basic managerial role that the manager plays. The manager builds relationship with the subordinate and communicate with them and coaches them and motivate them and promote them and for toward the innovation and creativity and to do their goal. Then comes the liaisons. He is the person who would be the liaisons, who would be doing liaisons with the other organizations. A manager acts as a liaison between the firm and the external environment. उसके बाकी लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ तो होना ही चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग जिसके साथ उसका काम पड़ सकता है उसके साथ भी उसके अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए ताकि वो उनके साथ लाइसेंस कर सके. He has to maintain a network contact outside the work unit to get help and information that effectively expect of the organization. Next, आगे आ जाती है उसकी इंफॉर्मेशनल रोल. क्या आ जाता है उसका इंफॉर्मेशनल रोल. एज अ फॉर एग्जांपल मॉनिटर. As monitor, a manager seeks internal and external information about issues of that can affect the organization. क्या क्या मसला ऑर्गेनाइजेशन को आ सकता है उसके बारे में वो मॉनिटरिंग रखे. Then comes the disseminator. The manager transmit meaningful information obtained from the internal or external एंड उसको ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बताता है. तो इस तरह वो एक एज अ ट्रांसमीटर एज अ डिसमिनेटर के तौर पर भी वर्क अपना प्ले कर रहा होता है. आगे देखें तो आगे आ जाती है उसकी स्पोक्स पर्सन. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ही इज द स्पोक्स पर्सन. He has the good speaking power. The manager must transmit information to the public and the government about the organization और उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में. आगे जाती है डिसीजनल. उसकी डिसीजन पावर भी अच्छी होनी चाहिए एंड ही शुड बी हैव ability to take good and the best decisions and he should have the disturbance handler. कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो उसको वो हैंडल कर सके. A manager should have the ability to do corrective actions when organization faces any difficulties or crisis. Then comes the entrepreneur. He should be an entrepreneur. He should be an initiator. He should be a designer. He should be a sponsor. He should be a promoter of change, of innovation and creativity. And he should be a resource allocator. उसको पता हो कहाँ कहाँ से resources लेने हैं मैंने. A manager distribute resources such as time, money, equipment, and time and human resources for the specific task of the of the organization. Then comes the negotiator. He have the good interpersonal and the communication skills, and the manager represent the organization in many major levels. So he should have the power of the negotiator and उसको
के अंदर जो है ना बात करना स्टार्ट करनी आनी चाहिए, एंड द मैनेजर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाती है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द मैनेजर। On the basis of their level, on the basis of their experience, there are different types of the manager: top level manager, middle level manager and the first level manager। चले इनको हम जो है वो पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके। तो मैनेजर्स की जो सीनियरिटी है उसके बेस पे उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड फर्स्ट लेवल मैनेजर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजर से। तो द मैनेजर कैरी आउट मैनेजर फंक्शन, बट देयर टाइम ऑफ स्पेंड ऑफ ईच फंक्शन में बी डिफरेंट। टाइम स्पेंड उनके टाइम के बेसिस पे जो है वो उनकी डिफरेंट हायरार्की है सेट की हुई। कौन बड़ा मैनेजर है कौन छोटा मैनेजर है इसके डिवाइड की हुई है इन्होंने। द मैनेजर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर टाइम स्पेंड फॉर द ईच मैनेजरल फंक्शन। यानी जितना उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उतना ही उनको टॉप लेवल का रैंक मिलता है। दैट्स वाई उनके ड्यूरेशन ऑफ देयर एक्सपीरियंस के बेस पर उनकी ये डिवीजन हुई हुई है। सबसे पहले है टॉप लेवल मैनेजर। इनको हम सीईओ, सीओओ, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या प्रेसिडेंट भी कहते हैं। ये 5% सिर्फ लोग बनते हैं। The manager at very top level of hierarchy are ultimately responsible for the managing of the entire organization. They are the top level managers. They are few in number and report of the board of the director of the fund, and they are the few in number and report to the board of directors of the firm, because they are the CEO and COO, yeah, directing manager, MD. Other than the typical titles, they are the given the titles of the top level managers, including the chief executive, chief executive officer, CE या CEO, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या प्रेसिडेंट या COO, दे एक्सेट्रा, इस तरह के इनको नाम दिए जाते हैं। द टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ द overall control over the of the organization. The top level managers spend more of their time in planning. In Most of the time, they spend the time in the planning, uh, and they don't have the direct contact with the laborers. And at the top level managers, their work is mostly conceptual on the basis of their design abilities, and the human skills are especially valuable, but they relatively little need to the technical development. They have very little or very small technical abilities, and in large companies, chief executive, a top level manager, can utilize technical abilities of his subordinate. He don't need technical abilities, उसको बस लोगों से काम निकलवाना आना चाहिए. So, however, in smaller firms, the technical experience होता है of the manager is quite supportive, ताकि वो अपने लोगों को जो है वो ज्यादा अच्छे से डील कर सके और उनके फंक्शंस में, उनकी फंक्शनिंग में जो है वो गलतियां निकाल सके। सीनियर मैनेजर फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल मैनेजर है, उसके अंदर एरिया एरिया मैनेजर्स होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर होंगे, प्लांट या फिर प्लांट मैनेजर होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर होंगे एंड ब्रांड मैनेजर्स होंगे। तो ये सारे मैनेजर इनके अंडर आएंगे। अब उनको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो ब्रांड मैनेजर, एरिया मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, वो उनको विद टेक्निकल नॉलेज उनको रिपोर्ट देते रहेंगे। उनको उनकी टेक्निकलिटीज और नॉलेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। विद एक्सपीरियंस जो है वो जो ये बन जाते हैं लोग, 5% लोग जो टॉप लेवल मैनेजर के पे पोस्ट पे जाते हैं। देन कम द मिडिल लेवल मैनेजर। Middle level managers are the beneath the top level, who are responsible for the work of the manager at the lower level. These managers sometimes supervise the operating personals. They mostly supervise the personals, and one titles of the middle level managers are like, for example, chief manager and chief, departmental head, and senior manager, etc. These middle level managers spend less time on planning and organization. Mostly इनका work जो होता है वो होता है supervision of the operating personals. At the first level, there is a less need of conceptual skills, and however, human skills are the essential skills that are needed, and the technical skills are also important for them. So they should have the human skills and the technical skills. For example, a production manager.
Brand managers, these are the middle level managers. They are mostly known as senior manager, chief, and the departmental head. Then comes the first level supervisor. The manager at the lowest level hierarchy is directly responsible for the work of operating employees. लेबर को जो देख रहा होगा वो होगा फर्स्ट लेवल एम्प्लॉय. इसको मैनेजर नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं सुपरवाइजर. They are directly responsible for the work of operating employees. These managers' function is at the interface of the management and the workforce of the organization. यानी ऊपर वाले मैनेजर्स और जो वर्कर लेबर है इनको के दरमियान ये ब्रिज होती है. सुपरवाइजर. The other designation of these managers are the first line manager and the supervisor. The first line manager are responsible for seeing routine operation and pursuit of the organization goal. जो ऑर्गेनाइजेशन में काम प्रोडक्शन हो रही है उसको ये मोस्टली मॉनिटर कर रहे होते हैं. Thus, they are extremely important for the source of the organization. Leading of subordinate takes ideal time for the first line of the manager. Technical skills भी इनके लिए important है. It is great important of the that from them. इसके अलावा human skills भी इनके लिए बहुत helpful होती है during the frequent interaction with the सबऑर्डिनेट्स. आगे आ जाती है abilities required for the manager. क्या क्या abilities होनी चाहिए for a manager? तो वो है ability to some minimum abilities are required to act as a managerial function of the planning, organization and staffing needed to the controlling. Most of the required prerequisites are as the follows. सबसे पहले है ability to communicate. यानी सबसे पहले आ जाती है नॉलेज बेस. दे हैव द नॉलेज, दे शुड हैव द नॉलेज. knowledge based relevant to be a particular manager. Manager job is the important requirement for the manager. Knowledge base is important about the industry and they should have the knowledge. नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्री, इट्स गोल, उसके प्लान, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिसीज, उसकी टेक्नोलॉजीज, उसकी प्रैक्टिसेस, कंपनी का कल्चर, ये सारी उसको नॉलेज होनी चाहिए. द एक्सक्लूसिव नॉलेज बेस enables the manager to accomplish या complete as much as of the short period of the time and take the action with only small bits of information at their disposal. Then comes the key skills. The ability to engage in a set of behavior functionally related to them and others, and that desired performance and the level of the given of the area. This type of the skills जो है इसमें आ जाती हैं हमारे पास. Technical skills, human skills, conceptual skills are needed for them as the skill news. आगे हम सबसे पहले इसकी divisions पढ़ लेते हैं. Technical skills कौन कौन सी चाहिए होती हैं. Technical skills that reflects the understanding and of the proficiency of the specialized area. यानी किसी भी वो एरिया के अगर वो सुपरवाइजर हैं या फिर मैनेजर हैं तो उनको वहां पर होने वाले काम के बारे में भी उनको पता होना चाहिए. टेक्निकल स्किल्स उनको वहां पर होनी चाहिए सारी. About the manufacturing, quality control and the production of the tablets, so they should have that technical skills and that is in the pharmaceutical organization. Then come the human skills. Human skills may skills are associated with the manager abilities to the work with other groups of the people and they should work as a leader. These abilities include intelligence, creativity, ability to convince, and ability to communicate, ability to decide and logical thinking होनी चाहिए, innovative and creative होने चाहिए, and they should have the sense of responsibility. Then comes the intelligence. They should be intelligent, and intelligence is the important human skills needed in the manager. It has for them to understand the aspects and the organizational and to deal with the combination of the technical, economical, financial, and legal elements of their organization. Then comes the creative. Creativity of the individuals is the innate ability to generate new ideas and conceive new perspectives or existing ideas. The abilities help the manager to make effective decision and effective approach to solve any problem. Then comes the ability to convince. A manager should interact with the subordinates, suppliers, and customers. Thus, our manager must be able to convince the people, and he should make all the subordinate to understand in the sense of manner, and he should convince them on जो वो चाहता है वो उनसे निकलवा ले, and he should have the ability to convince them ताकि वो सेम मैनर पर सेम पेज पर काम करें. Then comes the ability to communicate.
He should have the he should be competent about his interpersonal communication skills, and उसकी जो written and the verbal skills हैं of the communication वो बहुत professional होनी चाहिए. And he should be communicating the organization in a very respect and in a aspect of the need of the functioning of the organization, leading and coordination of the work. Then comes the decision ability. Manager should have a ability to take a quick decision making, and the decision making is needed for determining how work would be done, resolution of the conflict, and selection of one of the best resources about them. इस ये नहीं कि वो बस फैसला लेने में ही टाइम गुजार दे, उससे कंप्यूटर से आगे चले जाए. तो ही शुड बी अ क्विक एंड अ बेटर डिसीजन मेकर. देन कम्स द थिंकिंग अप्रोच. लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच होनी चाहिए उसकी. द मैनेजर वे ऑफ थिंकिंग शुड बी लॉजिकल, एंड ही शुड have ability to scrutinize and verify the fact. लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच जो है वो मोस्टली उसकी साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए. देन कम्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ मैनेजर शुड हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, and he should feel that he is the one who is responsible for his subordinates, and he is the one who is answerable to his seniors. Then comes the conceptual skills. The skills are related to the ability to visualize and the organization as a whole, understand करे कि उसकी interpersonal relationship, उसकी organizational relationship, उसकी skills को कैसे वो conceptually उस चीज में जा सकता है. A manager must have the conceptual skills. The concept other skills are the significant like intelligence. He should have the speak. He should speak and he should have to give a solution. ये नहीं कि कोई सोल्यूशन दे रहा है और सिर्फ सोल्यूशन दे रहा है, कोई एक्शन प्लान नहीं बता रहा और वो सिर्फ और सिर्फ राय दे रहा है. तो वो ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग इतने नहीं चलते. अगर कंसेप्टेड स्किल आपकी होगी ना, तो आप राय के साथ साथ आप ये भी बताओगे कि इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है. सो ये एक जो पावर होती है टू गिव अ कंसेप्चुअल एंड टू डू इन डेप्थ थिंग्स और उसके बारे में एक राय देना, तो ये एक चीज आ जाती है जो एक आपकी स्किल में ऐड ऑन होता है. और उसके अलावा एज अ मैनेजर आपको ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए किसी भी काम के लिए, टू डिस्कस थिंग टू और टू एक्सेल इन द फील्ड. एक्स्ट्रा टाइम भी दें. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में तो हैं आप, तो डिस्कस थिंग्स विद योर सुपरवाइजर, सीनियर्स एंड द मैनेजर एंड डायरेक्टर्स, ताकि आपको उनकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से जो है वो फर्दर इन्फॉर्मेशन मिले. I hope this lecture would be quite informative for you. If you have any query regarding the abilities of the manager and the function of the manager, please do ask in the comment section. For detailed study, our pharmaceutical marketing and management and marketing book by Dr Nadeem Irfan bukhari edition 2011 जो है उससे further इस topic को read out कर सकते हो. I hope this lecture would be quite informative for you. Kindly subscribe to my channel Ask Your Pharmacist Mariam, and do support me by subscribing, sharing this to your circle, and if you have any queries, you can ask in the comment section. Thank you so much for listening and your attention.